guys, welcome back to my another video of hashtag glam tutorial. This one is the Diwali special. So yes, this is the time of the year जहाँ पे हम अच्छे से तैयार होते हैं, हम फुल ग्लैम अप होते हैं एंड घर पे ही पटाखे बनके हम फूटते हैं क्योंकि इस बार तो क्रैकर्स के साथ साथ हम बाहर जाने की भी ज्यादा परमिशन नहीं है बिकॉज कोविड थिंग इज जस्ट नॉट लेटिंग अस बी अलोन. पूरी साल खत्म होने को आ गया बट ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा. बट स्टिल ओके फाइन, वी कांट हैव एनी वे आउट विद दैट. बट ठीक है, घर पे ही रहेंगे, घर पे ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ग्लैम अप रहेंगे, खुद पटाखे बनेंगे. सो या इस पूरे वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्यूटोरियल देने वाली हूँ, एक आई लुक पे एंड पूरे ओवरऑल लुक पे. लुक बुक भी होगा, सब कुछ होगा. इट्स अ गुड मिक्स चंक ऑफ एवरीथिंग. सो आपको देख के बहुत मजा आएगा. सो मेक श्योर यू वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द एंड. एंड काफी ज्यादा ईजी वे होगा, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स होंगे, जो पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को मैं यूज करने वाली हूँ, सो दैट इट गोइंग टू बी कन्वीनियंट फॉर यू ऑल. सो मेक श्योर यू वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द एंड. एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, so make sure you are subscribing my channel right now and छोटा सा बेल आइकन होगा, उस पर भी हाथ मार दो साथ साथ ताकि आप आने वाली नोटिफिकेशन मिस आउट ना करो. So yes, watch this video till the end and let's get into the video. By the way, ये पूरा जो weird सा जो चीज दिख रहा है ना, this is because of my look जो आप end में देखोगे, that's reveal. So wait for that. Okay, let's get into the video. Okay, so मैंने बेस मेकअप कर लिया है. So I'm going to show you guys what all products I have used. Firstly, मैंने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया, प्राइमर लगा लिया. उसके बाद फाउंडेशन के लिए I have used the combination of these two beauties. This is from LA Girl Pro. This is the illuminating foundation. And the other one is Lakme 925 just to mattify my oily regions like my forehead and the nose and the upper cheek area. So let's go ahead with the eye first. So हमें आई मेकअप करना है पहले because बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होने वाला है. So I'm going to use a देसी जुगाड़ जो मैं हमेशा यूज करती रहती हूँ जब भी मैं आई लुक क्रिएट करती हूँ. That is by using a cello tape. I'm going to place a piece of this cello tape over here. Okay, so I'm going to firstly do my eyebrows and for that I'm using Benefit Goof Proof Brow Pencil and this is in the shade 5 and I am obsessing over this one. I'm just quickly filling in my brows. मैं ज़्यादा boxy नहीं बनाऊंगी because I generally like to keep my brows little normal. Now after filling my brows, I'm going to conceal my upper lids and थोड़ा बहुत eyebrows को भी मैं conceal कर दूंगी just to give that very clean effect. With a flat brush. बफ एवरीथिंग आउट ताकि बहुत ज़्यादा एक सीमलेस सा बेस बन जाए हमारे आई शेडो के लिए, ताकि आई शेडो बहुत अच्छे से लंबे टाइम तक के लिए स्टे बैक करे हमारे लिड्स पे. Okay, done. So I'm going to set my lids now. I am going to use a compact powder. By the way, this one is Lakme 925 Collection Primer Matte Powder Foundation. So again, I'm going to use my powder brush. So I'm going to take thoda sa, dab the excess, and just bake your lids. So now I'm going to quickly jump over my lids. So जो कि हमारा मेन काम है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है. To start off, I'm going to use a transition shade. मैं पहले यूज करूँगी यहाँ पे ये earthy color. This earthy or you can use some brown color like this, which is very very light. क्योंकि transition shade हमेशा light होना चाहिए and for building that you have to use a fluffier brush. So I'm going to mix the both shade and then I'm going to place just right here. Transition shade, I'm going to use gel liner from the brand Maybelline and इसे मैं place करूँगी just the center of my lids. With this gel liner, I'm actually creating a base for my glitter to sit. क्योंकि जो glitter, जो light color के glitter होते हैं वो हमेशा dark color, deep colors पे ही ज़्यादा उभर के दिखते हैं. So that's the small trick by the way. Use the kajal trick and पहले उसको as a base apply करो and then make your glitter sit over it. So उसका जो shine है, उसका जो intensity है वो और ज़्यादा ही बढ़ जाता है. So that's a good trick.
Now once I have covered my lids with the black kajal, I'm going to take a very precise and very stiff blending brush, and उसके बाद मैं फिर से again एक brown transition shade उठाऊंगी, but this time it's going to be little more lighter than the previous one, जो कि सिर्फ और सिर्फ यही है. So I'm not going to mix anything with this one. So I'm gonna pick this thing. And मैं जो ये harsh line जो बन गई है because of this gel liner, I'm going to diffuse it all together so that बहुत ज़्यादा seamless लगे and बिल्कुल भी harsh lines ज़्यादा उभर के ना दिखे. Now next मैं यहाँ से अपनी palette से ये light blue जो shade है, बहुत प्यारा सा एक turquoise tealish kind of a shade है, मैं इसको pick करूँगी on the same stiff stipple brush. And उसके बाद again जहाँ पे हमने diffusing color use किया था, just उसको top करते हुए हमें इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा एक shadow cast करना है यहाँ पे, just to diffuse the black जो मैंने काजल लगाया था वो, बस उसी पे बस हल्के हाथों से just like an outline. We have to give it a very, diffuse kind of a look with the blue shade. You can see how beautiful this whole diffusion is looking like, जो कि dark shade से light होते जा रहा है, like a jet black, उसके बाद थोड़ा सा diffuse grayish, फिर then blue का tint and then the brown cast जो ऊपर create हुआ है. That's something which we need to create. So हमेशा लाइट कलर पिक करो, जितना भी आप डिफ्यूज करना चाहो हमेशा पिक लाइटेस्ट शेड and then diffuse it on the deeper shades. Now after diffusing the whole blue shade into the deeper shades, what I'm going to do is the final step, which is placing my beautiful glitters, and I'm so excited to show you guys my very new palette. So yep, this is the one. So you can see such beautiful shades and all are so pigmented. थोड़े से इनके particles जो हैं थोड़े बहुत chunky हैं, but it just sits right there over your lids. So my whole look is going to be somewhere जहाँ पे मैं इन colors का use करूँगी, just these three shades all together. So मैं ज़्यादातर glitter shades को place करने के लिए fingers का use करती हूँ. आप चाहो तो एक flat brush का भी use कर सकते हो. So I'm just going to dab my finger into it and इसको सीधा सीधा मैं अपने lids पे place कर दूंगी, but just at the center. Ooh, can you see that, guys? Oh my god, this is literally crazy, and look at the color. It's so beautiful. It's to die for. Okay, so I have placed my teal shade over my lids. Now I'm going to pick the another shade, which is this very royal blue shade. So again मैं उसी fingers से इसको pick करूँगी, and now I'm going to place at the outer corner, just right here, mixing थोड़ा सा teal के साथ. This is just looking like a dream, and I'm so loving playing with the glitters right now. So after placing my blue shade just with my teal one, अब मैं inner corners पे थोड़ा सा highlight illuminating वाला effect करने के लिए I'm going to use something which is very light shade. So I'm going to use my flat brush and इसको थोड़ा सा dab कर लेते हैं. And then I'm going to pick a very beautiful glitter shade. Let's play with the silver one. Alright, so now I'm going to again do the previous step, जो कि था मेरा diffuse करना. तो क्योंकि glitter लगाने से थोड़ा सा diffusion दिख नहीं रहा है, उतने अच्छे से transition दिख नहीं रहा. So I'm going to again pick some brown shade and I'm going to quickly run on my crease line.
Alright, so glitters के बाद I'm going to use the same diffusion color जो मैंने crease line पे create किया था diffuse करने के लिए, वही transition shades को मैं दोबारा पे lower lids पे use करूँगी. So जो हमारा काजल है उसको मैं थोड़ा सा लूँगी on a precise brush. Just going to place at the center of my lower lid. उसके बाद I'm going to use my previous stippling brush and again I'm going to pick some brown transition shade and इसको फटाफट से इसको काजल को मैं अच्छे से diffuse कर लूँगी. Again from the palette I'm going to pick the same teal color and I'm going to place it just on my lower lashes. And that's it. And I'm going to remove this tape. Okay. Now this is very snatched and looking quite sexy. So what I'm going to do is, जो नीचे क्योंकि glittery था, क्योंकि particles था, थोड़ा chunky था. So what I'm going to do is I'm going to quickly take my sponge and I'm going to dab it. So आप brush से इसको dust out कर सकते हो. So now next I'm going to take my concealer, which is a Maybelline Age Rewind Concealer. I have been always talking about this one to just conceal my under eyes. And again I'm going to take my compact powder and I'm going to set my concealer. Voila, done. So we are done with the eye makeup overall. And it's very simple, it's not that too heavy, easy to carry in any party. If you wanna just glam a little bit, अपने पूरे makeup को nude रखना है हमें and just to play with the eyes. So let's get into the nude whole face makeup. So you can see some drama setting over here on my eyes. So yes, मैंने lashes लगा लिए हैं, like full dramatic mink lashes, and I'm totally loving this look. उसके बाद I'm going to place my highlighter. This is Maybelline Master Chrome in the shade Molten Gold. After the highlighter, I'm going to use my very dramatic lipstick once again. So I'm using this full Jhindak Fuchsia Pink lipstick from the brand My Glam, and I think the shade number is 15, which is Cupping. Okay, so this is my final look with the whole glam up makeup which I did for the Diwali. And yes, अभी ये पूरा ट्यूटोरियल पूरा हुआ नहीं है, so एक्सरसाइज करना रह गया, पूरा लुकबुक तैयार करना रह गया, so वो आप देखोगे अभी. So yes, let's get you there.